just chill यार, this is not the end. मतलब okay, important है, but then also this is not the end of your life, right? So never take too much stress about it and stay focused. I think that is the most important thing in your preparation. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Tamanna Chaudhary and I am a physics educator on Unacademy for NEET UG. And in this very special video, we have with us Arpit Narang, Air 7, right, in NEET UG 2022. And basically the motive of this video is for me to ask as many questions to him as possible, keeping in regards what you would have for him to ask. So Arpit, I have a lot of questions to ask from you, but I will begin from, like, there are different motives with which a student aspires to become a doctor, right? For you, what was that inspiration and when did it strike? So simple सी बात ये है that my entire family is from finance background. Okay. Be it my mother, my father, my grandparents, everybody is from finance. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल ग्रोइंग अप आई फील दैट उनको देख के ऐसा लगा दैट यू नो दिस थिंग इज़ नॉट मेड फॉर मी. लाइक मुझे वो रियलाइजेशन अपने आप स्ट्राइक हुआ. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट माई ग्रैंड मदर शी रिटायर्ड फ्रॉम PGI, एज यू वुड नो इट्स इन चंडीगढ़. सो शी वॉज अ सुपरिटेंडेंट इन अकाउंट्स ऑफिस, अगेन फाइनेंस, बट उनके साथ मैं जाता रहता था. सो इट्स बेसिकली अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एजुकेशन. सो वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता था. एंड आई थिंक तभी से मुझे स्ट्राइक किया दैट येस यू नो दिस लाइफ इज़ कूल, दे आर हेल्पिंग अदर्स, यू नो, एंड यू नो दे आर एंजॉइंग, सो व्हाई नॉट. So helping others was your motive with which you want to become a doctor now? Yeah, one of. Another one was, yes, family का भी एक डॉक्टर हो जाएगा because no one is a doctor in my family. Okay. So when did this inspiration strike? बचपन से ही, लाइक माई ग्रैंड माँ सिंस द डे आई वॉज बॉर्न टू द डे शी रिटायर्ड, वो PGI में ही थे. तो मैं जाता रहता था, बात होती रहती थी. आई थिंक वो ऑन द वे कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन भी मिला. So the next question basically revolves around the conversations that I have had with my students, and that is, did you start preparing from 11th or did you waste class 11th or maybe not put that much attention and then got serious in class 12, which is like the majority of the cases with my students? तो मैं बताता हूँ. My last board exam of grade 10th was on I think 17th of March and 18th को उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वेरी एंग्री कि हाँ, कोविड जो था वो दिसंबर-नवंबर से चल रहा था. तो व्हाई डिड दे वेट टिल द लास्ट एग्जाम टू गेट ओवर एंड यू नो देन अनाउंस लॉकडाउन? दे कुड हैव डन इट अर्लियर आल्सो. बट हाँ, जैसे 10th ग्रेड खत्म हुआ उसी एक दिन बाद द लॉकडाउन स्टार्टेड. फर्स्ट 2 weeks इट वाज यू नो everywhere, everyone's focus was on COVID only. So at the time I think 2-3 weeks तो there was nothing major which happened, but then already decided था कि PCB लेना है, bio करनी है. तो classes started in I think April, 10th of April से शुरू हुआ. And I've always been you know कि हाँ friends के साथ पढ़ाई करने में मज़ा आता है. Group study. Yeah, not group study to be exact, but classes, मतलब offline classes, वो जो interaction रहता है ना, you know, friends के साथ, teachers के साथ, वो मेरे को मतलब शुरू से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो एकदम से online हो गया and you know room में अकेले बैठे हैं and there's no one to interact with, you just have a screen on the, and वो feeling नहीं आया मुझे उस time. Because everyone was trying to figure a way out to make it more interactive. It was still in the initial stages. So now it has reached a nice level, I can say. But in the initial stages, it was not that interactive. So थोड़ा वो interest भी नहीं था उस time. तो 11th, I think इतना ज़्यादा focus नहीं कहूँगा मेरा भी था. But towards 11th के end में, 12th की starting में offline classes started, and then you know I met with my friends and I saw that they had made some real progress and I was still lagging behind. And then teachers के साथ भी बात हुआ and करके then I started covering up my 11th backlogs also in 12th. Okay, so I can say that you were inspired by your friends and the people around Yes. you.
Okay, so I'm actually very glad that he said this because like I told you, a lot of my students ask me this that हमारी क्लास 11th बर्बाद हो गई है तो क्या अब नीट क्रैक हो सकता है? तो नीट क्रैक होना छोटी बात है, you can do something as amazing as what Arpit did. Congratulations Arpit, great feat you have achieved and now you have become inspiration to so many. So I would like to ask, like, had I been in your place, let me just put myself in your place, and if I decide कि okay आज से मुझे पढ़ाई करनी शुरू करनी है, मेरे friends आगे निकल गए हैं, मेरे teachers मुझे motivate कर रहे हैं, so what were the resources that you assorted yourself to? See, I think if anyone's serious, I'm speaking for the majority of people, if they're serious about cracking this exam, most of them join coaching, right? Like, it's not the case with everybody, but most of them prefer to join coaching. So first of all, let me tell the resources for them. For them, the first and for everyone, in fact, the first and foremost resource is NCERT, as everybody knows. Right. And इस साल का NEET 2022 का पेपर देख के पता ही लग गया लोगों को that yes, NTA has shown that yes, even if we'll ask questions directly from NCERT, still we can make a tough paper. True. So I think first and foremost thing is to cover NCERT properly. But then at the same time, जब आप initial stages में होते हो 11th-12th के, just NCERT is not sufficient enough because NCERT के बाहर भी थोड़ा सा अपना खुद का एक base बनाना important होता है. तो I think जो coaching का material होता है for those people joining who have joined coaching, for them I think that would be a very good help because I think detailed रहता है. Doesn't matter which coaching you're going to. The material is nice. तो उस मटेरियल को फॉलो करो. टीचर्स का नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को भी एज दे प्रिपेयर दे फिगर आउट दैट यस जो नोट्स के अंदर ये चीज़ है दैट इज़ नॉट ऑफ दैट इंपॉर्टेंस. आई थिंक वो अंदर से भी स्ट्राइकिंग कर जाता है जब वो एग्जाम्स देते हैं, उन्हें पता लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. इट वॉज जस्ट मतलब अगर कोई बच्चा ओलंपियाड टारगेट कर रहा है, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम और हर, बट नॉट इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन नीट. That is one thing. Teachers' note is one thing. Apart from that, I think regular tests are very important. Resource, I think greatest resource for aspirants are the tests which they give. So if you had to name some books, for all the 3 subjects, which books would you name? Physics का मैम स्टार्टिंग में 11 था तो उस टाइम मैंने NCERT तो नहीं किया था. At that time I was solving DC पांडे. Okay. बोथ वर्जन आता है, नीट का वर्जन भी आता है, जेई का वर्जन भी आता है. मैंने जेई वाला वर्जन किया बट नॉट टू द स्ट्रेच बिकॉज उसके अंदर जेई एडवांस के भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं. सो आई नो वेयर टू स्टॉप कि हाँ नीट हैज़ इट्स बाउंड्स इन दिस ओनली. सो आई डिड दैट बुक एंड मतलब पूरा 5 वॉल्यूम्स आता है. आई थिंक आई डोंट नो 6 वॉल्यूम्स फॉर नीट. मैंने DC पांडे का सॉल्व किया. कमिंग टू केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक आई थिंक VK जायसवाल सर की बुक आती है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैंने वो फॉलो करी एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अवस्थी पूरा नहीं कहूँगा पूरा सॉल्व किया बिकॉज कोचिंग मॉड्यूल वाज आल्सो देयर. तो मेरा मेन फोकस कोचिंग मॉड्यूल पर रहता था एंड इफ़ आई फिनिश्ड इट और थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है अब तो साइड में सॉल्व कर ली वो बुक. सो इट वाज नॉट माय मेन बुक, इट वाज जस्ट एज अ साइड रेफरेंस. एंड फॉर ऑर्गेनिक माय टीचर्स ऑलरेडी गेव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द नोट्स, सो इट वाज वेरी सेल्फ सफिशिएंट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बुक लगानी हो फॉर मी बेसिकली इट वाज कोचिंग मॉड्यूल ओनली. And yeah, for organic chemistry, I think that was it. Okay, so while you were solving these questions, NCERT was running behind you like along your side, or you abandoned it? शुरू में नहीं था. I'll be very honest because biology में था because teachers भी focus कर रहे थे that yes NCERT is important for biology, but in the initial stages chemistry and physics का मैंने इतना नहीं पढ़ा था. But then in the later stages जब theory के questions आना शुरू हुए and then teachers pointed out that this is a direct NCERT line. So and तो अंदर से भी self realization हुआ that yes we have been skipping the most important part of our preparation, that is NCERT. तो फिर वो मैंने मतलब towards 11th and वही बता रहा हूँ ना, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ I started with all of that regularly. Okay, so you would say to the viewers that NCERT, like skipping NCERT initially is a step that you regret taking? Yeah, and definitely. Okay, and you would not advise the viewers to do that? Yeah, even mechanics, many people physics mechanics वो सोचते हैं कि just problem से हो जाएगा. नहीं, उसका भी NCERT is very important. True. I'll tell you. I'm actually so glad you said this because I'm going to share this exact video to my students and ask them to watch this particular segment. Nice. Okay, and what about biology? I believe you missed it. Yeah, biology का main focus was NCERT obviously. Teachers का notes was always there. एंड मेरा जो कोचिंग मॉड्यूल था उसके अंदर इट वाज
लाइक हर एक चैप्टर के 400-500 क्वेश्चन होते थे एंड बायो डज नॉट टेक दैट टाइम. 400-500 क्वेश्चन सीम्स लाइक अ लॉट, बट बायो को अगर आप सॉल्व कर रहे हो 1.5-2 घंटे में हो जाएगा. इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क. तो बस वही करता था एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था दैट यस इतना ज़्यादा मैंने फोकस नहीं करना. मैनी पीपल ओलंपियाड लेवल की बायो पढ़ के नीट देने जाते हैं एंड इट्स ऑफ नो यूज़. उनका बेस उतना स्ट्रांग नहीं होता बट उन्हें फैक्ट्स जो हैं वो ओलंपियाड लेवल के पता होते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ डिसएडवांटेज रादर देन बीइंग बेनिफिशियल फॉर देम. So being focused to what lies in the syllabus is a crucial part while preparing. Like you should know where to stop. Very nicely put. Thank you. Okay. So Arpit, like if I talk about these three subjects like physics, chemistry and biology, so different skills are needed. Like somewhere logical reasoning is needed, for subjects like physics and then there are portions where you need to rely on your memory. Yeah. So I can say that all three subjects, I don't know, like were there different approaches, and if there were, I would like to for you to explain in detail and break the strategy of these three subjects. I think मैम जैसे पाई चार्ट होता है ना उसके अंदर everything holds importance but the percentage importance varies. So I think all skills are important in all subjects but the way you balance those skills is important because physics में rote memory is it plays a role when you are trying to memorize some theory. For example aurora borealis के colors होते हैं stuff like that. उसके लिए you need your memory but for most part you need logical reasoning and for me that was pretty easy because means 8th class से I was solving mental ability because I was targeting NTSC at that time. तो mental ability में solve करता था तो उससे I think मेरी skills develop हुई थी. Exactly how you did that, like for the viewers who have no idea how do they develop the skill? मतलब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जैसे नंबर सीरीज हो जाता है एंड में क्या लेटर या वर्ड आएगा, स्टफ लाइक दैट. वो मतलब मैं तो जस्ट एज लाइक एक एग्जाम टारगेट बड़ी कैजुअली 8th 9th 10th में करता था बट आई थिंक दैट हैड अ रोल टू प्ले समहाउ. एंड अगर आपसे इफ यू फील दैट यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन दैट thinking aspect, I think then having a glance at all like most of the types of questions which NTA NEET asks and to just perfect them, like the question types if you're not strong in thinking. Because some people क्या होता है वो क्वेश्चन देखते हैं एंड वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, उनका आइडिया हो जाता है कि हाँ ये ऐसे करना है. कुछ लोगों को वो आइडिया नहीं स्ट्राइक करता एग्जाम में. फॉर देम आई थिंक प्रैक्टिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम. तो आप उन लोगों के लिए जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस वो करो एंड yeah, I think that's it. So I would like all the students to know that Arpit scored 180 on 180 in physics, 360 on 360 in biology, but in chemistry he lost 10 marks. Yeah. So Arpit, like help the students with the strategy and what mistake cost you those 10 marks. Do not get me wrong. Amazing score, but I know 170 in chemistry basically due to two questions. One of them was from solid state and another I feel it was a statement type question but I felt it was very vague, so I was confused in the second statement. So and I was confident until the key came that yes, mine will be wrong and everybody else will do it no, mine will be correct and everybody else will do it wrong, and I was so confident but then the answer key came and then I was sad. But I think means उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रेपरेशन में कोई गलती था उसमें, but I just think the question which came was very vague and it could have been either of the two. So उस टाइप की questions के लिए we can't do anything and means मतलब that depends on the examiner because सबको feel होता है कि हाँ both the options are correct but at the end of the day they have to give just one, right? True. And a similar thing happened in botany and many people lost marks. My heart goes to them. But yeah, I'll break down my strategy for chemistry. 3 parts होते हैं, organic, inorganic and physical. Physical, as people know, it's very similar to physics. Sure. And उसके अंदर क्या होता है, this formula part which you can derive in the exam, but then it's a very long process. True. तो मेरे लिए क्या था, मैं वो जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं, नॉट द एडवांस टाइप ऑफ फार्मूलाज कि हाँ जो पर्टिकुलर केस में यूज़ हो रहा है, नॉट दोज फार्मूलाज बट दोज फार्मूलाज विच आर वेरी स्टैंडर्ड, जैसे बफर का पीएच क्या होता है, थिंग्स लाइक दैट, सॉल्ट एनालिसिस के फार्मूलाज, दोज थिंग्स आई मेमोराइज्ड एंड वेंट टू द एग्जाम. सो आई थिंक दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड मीन्स क्वेश्चन आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में जो होते हैं ना, दे आर वेरी लाइक इतना ब्रॉड एस्पेक्ट मेरे को नहीं फील होता. मीन्स दे आर वेरी
लाइक कन्फाइंड टू अ स्मॉल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए बस आई थिंक हर एक टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसको एक एक बार प्रैक्टिस करने, दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। जैसे फिजिक्स की स्किप हुई थी मेरी, फिजिकल केमिस्ट्री की भी हुई थी, एंड आई फील लाइक बिकॉज वो मैंने किया इसलिए एक क्वेश्चन गलत हो गया। बट इवन दो टुवर्ड्स द एंड मैंने किया, बट देन अगर शुरू से किया होता आई थिंक दैट आई वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सो डोंट मेक द सेम मिस्टेक। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं विच आर विच डू नॉट सेट विद टीचर्स, लाइक कुछ चीज़ें दे फील आर रॉन्ग। तो एक बार वो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके प्रॉपर एक्शन नीड्स टू बी टेकन। अपार्ट फ्रॉम दैट रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनसीईआरटी हर एक रिएक्शन को डिटेल में नहीं बताता, बट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, फ्यू प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर ऑल्सो देव आस्क्ड। सो उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नो द मैकेनिज्म्स फॉर एज मेनी रिएक्शंस एज यू कैन, एंड उनके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करो। आई थिंक उससे योर ऑर्गेनिक वुड बी सफाइज्ड। कमिंग टू इनऑर्गेनिक, आई कन्फाइन माई सेल्फ ओनली टू एनसीईआरटी, नथिंग आउट ऑफ इट। बट कुछ चीज़ें होती है जैसे देर नॉट मैंशनड इन एनसीईआरटी, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स, ये जो छोटी मोटी चीज़ें लिंक कर सकते हो आप और आपको फील होता थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आप अपनी एनसीईआरटी में साइड में जॉट डाउन कर लो। एंड एनसीईआरटी में थोड़ी सी स्पेस होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्लू कि इतनी इन्फॉर्मेशन रखो जो उस छोटी सी एरिया में संभल जाए। Apart from that, focus mainly on NCERT and read it as many times as you can, not just before the exam but throughout, whenever you're preparing. I feel giving time to inorganic chemistry separately is very important for an aspirant. Okay, so with respect to your insight, I'd like to ask just 2 to 3 little questions. Let the answers be very brief, as you like. Number one, like you told me that in physical chemistry you need to like you were memorizing some formulas. Yeah. So how were you memorizing? Were you writing them again and again, or do you have some special trick? Like okay, for example, I'll take one ionic equilibrium chapter होता है, right? तो उसके अंदर you have to tell like what will be the pH in different cases, weak acid, strong base, strong acid, weak base. उसके अंदर memorizing one formula, उससे आप सारे formulas link कर सकते हो। तो फॉर मी द थिंग वॉज जस्ट मेमोराइज वन फार्मूला, एंड उससे वो बाकी के जो सारे फार्मूलाज हैं वो ऑटोमेटिकली मीन्स इट ऑल एड्स अप। मतलब वो मेमोराइजिंग द पैटर्न, या ओके, लाइक वो पैटर्न बस एक आप लर्न कर लो एंड बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली माइंड में स्टोर हो जाते हैं। सो देयर इज नो नीड, इतना डिफिकल्टी नहीं आता फार्मूलाज लर्न करने में आई थिंक। बाकी बफर का होता है, एक ही फार्मूला होता है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। मतलब ये सब चीज़ें मीन्स आई थिंक फार्मूलाज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री to memorize. Second question is exactly what was the indicator for you with respect to the extra information that okay, this needs to be jotted down in my NCERT and I'll leave the rest of the portion. इस मामले में I feel teachers play a very crucial role, because experience उन्हें है। तो जो मीन्स एक बार जब वो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं दे टेल एवरीथिंग दैट दे नो, राइट, बट टुवर्ड्स द रिविजन प्रोग्राम विच जो आखिरी के 10 months बच जाते हैं उसमें बच्चे यूजली करते हैं आई थिंक 8 to 10 months। तो उसके अंदर द टीचर्स बिकम वेरी स्पेसिफिक दैट यस दिस इज़ द ओनली एक्स्ट्रा थिंग विच यू नीड टू नो। सो आई ट्रस्टेड माई टीचर्स ब्लाइंडली एंड थैंक्स टू देम मेरे को इतना स्ट्रेस और इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लर्न करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। सो आई थिंक दैट इज़ completely the hats off to my teachers for that. So that is a great message that Arpit has just recently sent in front of all of you, that having a mentor just eases the path. Yeah. There is an instant show of direction. Yeah. Okay, so now if we jump to biology, so there are 2 segments. Would you like to take zoology first or botany first? Okay, I'll go with botany. Did you like it more? No, we have to pick one, so I'll choose botany. Okay, so what was your strategy? Okay, botany, wonderful teachers have taught me, and शुरू में so it's not like botany में okay, I'll agree few chapters are completely rote learning, but then few chapters have a very practical application. For example, respiration and photosynthesis being some of them. तो I feel that botany में अपने आप को इट गोज़ फॉर द इंटायर बायोलॉजी, जितना आप अपने आप को एनसीईआरटी में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 chapters विच आई टुक, इनमें अंडरस्टैंडिंग द फुल मैकेनिज्म इज़ इंपॉर्टेंट, जो कि इतनी अच्छी तरह एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है। तो फॉर दैट आई थिंक टीचर्स प्लेड अ वेरी बिग रोल, एंड उसके अंदर जो पूरा एक फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट के टाइप में दीज 2 chapters मैंने किए, एंड
उसके अंदर मीन्स बेसिकली इट्स केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं इस चैप्टर में. सो आई थिंक दैट यस उनको हर एक रिएक्शन को समझना एंड देन उसके साथ एक एंजाइम एलोकेट करना, इट बिकेम अ रियली इजी टास्क फॉर मी. Then people know there are some chapters like morphology and plant kingdom, which I was about to ask you a question on this. Because वो chapter अब you can't skip it, but मतलब इसके में हेल्प क्या करता है, आप एनसीईआरटी से बाहर कुछ ना पढ़ो. लाइक आई सी माई फ्रेंड्स ऑल्सो एंड अदर पीपल दे स्टार्ट लर्निंग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल मेंशन नहीं है, एंड वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं. एंड आई थिंक पिछले 3-4 साल से एनटीए हैज़ गिवन अ क्लू दैट येस विल बी confining ourselves to NCERT only. तो I think उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो. Like if you're trying for Olympiads, उसके लिए might be beneficial, but I don't think for NEET it's absolutely required. So I think just restrict yourself to that small hub of knowledge NCERT has and not try to expand on your own. Okay, so I would like to go a little deeper and ask you a question which I told you I'm going to ask you on morphology and plant kingdom. Okay. The reason behind picking these two chapters is because number one, there is a, how do I say this, there are different levels. For example, you take from plant, then you come to the, I do not remember the name, then you come to, I'm getting it. Yeah, you get it, right? Yeah. So there is a hierarchy that needs to be memorized and also the examples that come with it. Yeah. So that is extremely tricky. So how did you cope up with that? मतलब ऐसा कुछ था कि जैसे ही बेड के आगे जो दीवार है उसके ऊपर चिपका दिए एग्जाम्पल्स वगैरह लिख के? एक्चुअली लाइक ये जो आपने हायरार्की बोला ना, दिस द चाइल्ड विल डू ऑन इट्स ओन. एनसीईआरटी ये नहीं करता है. व्हाट एनसीईआरटी डज इज बस किंगडम प्लांट बता देता है, राइट. उसके बाद डिफरेंट डिविजन्स बताता है, उसके एग्जाम्पल्स दे देता है, एंड समटाइम्स क्लासेस ऑल्सो कम. बट 3 levels ऑफ हायरार्की के आगे अगर बच्चा जा रहा है, सो he is going himself or herself. So NCERT is not mentioning that. Okay. So I feel अपने आप को वहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट करो. That yes, उन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अब उन 4 एग्जाम्पल को भी वो देख रहे हैं कौन सी फैमिली में आता है, कौन सी क्लास में आता है. वो मीन्स थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है आई फील, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड. तो वो आप मीन्स लेवल्स ऑफ हायरार्की आप जितने अपने आप को कन्फाइन कर सकते हो उतना करो. So that will be beneficial. So if I give you a situation like there are a few examples on let us say inflorescence. Yeah. But then I pick a module and I see some more examples and now I'm tempted to think that I need to memorize these examples as well. Not at all. This is what I've been focusing on. Don't get tempted from the extra information that you're getting from outside. जितना NCERT ने बोला है उतना काफ़ी. Yes, but in few aspects जैसे इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ना, वो बाद में वो फैमिलीज डिस्क्राइब करते हैं, उसके अंदर भी बता देते हैं. तो वो आप जो एंड का पार्ट है मॉर्फो का, उसमें से इन्फ्लोरेसेंस निकाल के इन्फ्लोरेसेंस की साइड में लगा लो, विच इज़ देयर इन एनसीईआरटी ओनली, विच इज़ नॉट आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी. बिकॉज ये ट्रिकी पेपर बनाया है, ये लोग यही ऐसे ही काम करते हैं. सो यू नीड टू बी स्मार्ट इन दैट एस्पेक्ट. जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है ही नहीं, नोवेयर मेंशन्ड, उसको क्यों कर रहा. So if I had to jot down the conversation that we had in the last 2 to 3 minutes, Arpit is only saying that limit yourself and be smart to limit yourself just to the NCERT, at least for the biology portion. And what about zoology? Like students are crazy over human physiology and stuff. Yeah. Because medical में बाद में भी यही सब चीज़ करना होता है, so they get tempted in 11th 12th only. That yes, आगे भी यही पढ़ना है, so they start exploring. Okay. जो कि उस टाइम इट्स नॉट रिक्वायर्ड. 11th 12th में आपका फोकस शुड बी टू क्लियर नीट एंड देन गो इनटू अ गुड कॉलेज, एंड वो सारी चीज़ें एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, एम्पल अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन गुड कॉलेजेस टू डू ऑल ऑफ दैट. बट वो लोग 11th 12th में करना शुरू कर देते हैं, which I don't think it's really advisable, because your main focus is to crack an exam which will help you achieve all those things later. Got it. तो अपने आप को, even though it's even I got tempted to know things which were out of NCERT, but I think I had control over myself, so I was able to control it. But yes, कुछ चीज़ें होती हैं, a very few topics require a lot of brain and a lot of logic. तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अपने आप से लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं दे विल गेट स्टक.
तो उसको उस पाथ को ईज करने के लिए आई थिंक टीचर्स वर ऑलवेज देयर. उन्होंने जो कॉन्सेप्ट विच रिक्वायर्ड लिटिल बिट ऑफ एप्लीकेशन वो समझा के बिकॉज अगर वो आप कॉन्सेप्ट समझ आते हो ना देन इट गेट्स ईजी फॉर यू. Right. Because you know the mechanism behind it कि कैसे the thing is working. So I think it gets very easy on the way. So if I talk about NEET 2023, there are 9 months left, right? Yeah, 9-10 months. 9-10 months. So had you been preparing for NEET 2023, what would your strategy be with respect to number 1 syllabus completion, number 2 how many times you need to revise, when do you need to revise, does it has to be during the syllabus coverage or once you are done with the entire syllabus, and third, like just include all these points, test. So I think most of the places क्या होता है that exam के 7-8 months पहले syllabus खत्म हो जाता है. So for some people syllabus might have already completed once, in the institutes and wherever you're studying from, and for some people it's about to end, right? तो means अभी बस ये मतलब समझ जाओ that whenever this interview is published उसके means within +- 2 weeks syllabus खत्म हो जाएगा उन बच्चों का. तो I feel first of all coming to revisions, पूरा सिलेबस आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन नहीं कर सकते रिवाइज बिकॉज आप यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. सो एट द सेम टाइम यू कांट पिक अप द अर्लियर थिंग्स. दैट इज जस्ट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द ब्रेन. तो आई डोंट एडवाइज दैट. मीन्स टेस्ट्स होते हैं, फोर्टनाइटली टेस्ट्स होते हैं वेयर अ कल्मिनेशन ऑफ द पास्ट 1 month, पास्ट 2 month, इन चीज़ के टेस्ट्स होते हैं. तो you give those but not the entire syllabus. That is pretty much impossible to do. And फिर अगले 9 months भी हैं. So I divide my revision program into like 4 phases. The first one, the revision is very vast. Like जितना पढ़ा है उतना सारा का सारा रिवाइज करने का ट्राई करता हूँ. So easily don't get stressed if you think you're taking so much time. Easily 4-5 months लगता है इसमें. You do that with the help of notes you have prepared. Yeah, basically उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, we keep on cutting what's not important. Teachers भी उसमें help करते हैं. Because because teachers have to teach because some people are targeting Olympiads. तो उन्हें उनका भी preparation को देखना है. So teachers will teach what they know, right? So but towards the end, NEET becomes the topmost priority for most of the people. So they start cutting down on things which are not required. And उसी means you keep on reading and you keep on cutting what's not required. मैंने तो ये किया था फर्स्ट रिविजन में, ताकि जब सेकंड और थर्ड रिविजन में कर रहा था तो मेरे लिए इट वॉज वेरी इजी टू फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट रिविजन वॉज वेरी बिग. ऑलमोस्ट मेरे को 3-4 महीने लग गए थे कंप्लीट करने में पूरा सिलेबस, एंड वेरी डिटेल्ड. लाइक जैसे सिलेबस करवाते हैं यूजुअली एंड जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं वैसे, मतलब हर एक चैप्टर को 4-4 दिन 5-5 दिन देना इन रिविजन, वैसे था. उसके बाद सेकंड फेज था, उसके अंदर भी मतलब बायो का तो यू हैव टू बी डिटेल्ड फुल टाइम, यू हैव टू मेमोराइज दोस एनसीईआरटी लाइंस. तो बायो का तो आई थिंक एक जैसा ही चलता रहता है टुवर्ड्स द एंड अंटिल द एंड. वो आखिरी का जो 14-15 डेज होता है उसके अंदर पीपल स्टार्ट पैसिव रीडिंग and just seeing the important points rather than reading the entire theory. But physics chemistry के लिए dividing into phases is very important. फिर उसके बाद जब पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसके बाद सेकंड रिवीजन आप कंप्लीट करते हो, दैट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट कंसाइज. एंड ऐसे चलते सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन तक इट शुड बी वेरी रैपिड. Did you make any kind of 2-page notes to pacify your fast revision? लाइक मेरे शॉर्ट नोट्स तो मैंने नहीं बनाए. आई डोंट बिलीव इन शॉर्ट नोट्स अपार्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक they're important, not short notes per se, but like highlighting what's important, and that becomes very important for that. तो that I think for inorganic chemistry is important. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैकेनिज्म्स एंड तक याद ही हो जाते हैं. तो मीन्स एंड में उसमें बहुत टाइम बच गया, दैट सिर्फ मैकेनिज्म रिएक्शन का नाम एंड अ फ्यू प्रॉब्लम्स. तो दैट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टुवर्ड्स द एंड. एंड बाकी फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब फॉर्मूलाज का अलग चार्ट वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. वो ऑनलाइन एंड बाकी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हार्ड वर्क किया हुआ उस चीज़ पे. सो आई थिंक यू शुड बी स्मार्ट लाइक मी इन दैट. यू जस्ट सर्च ऑन नेट फिजिक्स formula chart sheet, you'll get it online, right. and वो already पूरा compiled होता है. I think उसमें कुछ मिस नहीं हो रहा होता, तो उसमें टाइम बच जाता थोड़ा सा. तो I feel that yes, formula sheet बना लो अगर बना सकते हो.
एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बना लो। बायो के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, बायो की एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। Okay. So you used to highlight the all important statements that were prone for you to. लाइक मैम मेरे लिए ऑनलाइन था, तो आई स्टडीड ऑन iPad फुल टाइम। iPad पे नोट्स बने हैं मेरे, एंड iPad पे ही पूरा मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया 2 years का। तो उस पर क्या होता था, यू कैन हाईलाइट एंड देन यू कैन इरेज इट, मतलब इट डिपेंड्स ऑन मी। मैं फुल रीडिंग करना चाहता हूँ तो मैं वो हाईलाइट्स हटा दूँ, मैं पढ़ लूँ, एंड यू नो जो इंपॉर्टेंट है उनको यू नो हाईलाइट मीन्स इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी इन दैट एस्पेक्ट ऑनलाइन नोट्स। तो या आई यूज टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टुवर्ड्स द एंड मैं वही पढ़ रहा था एंड में। और टेस्ट के बारे में, लाइक से समथिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हेन अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट गिविंग फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट्स आई फील जब आप अपना पहला रिवीजन शुरू करते हो, तो स्टार्टिंग में तो नहीं, बट जब पहले रिवीजन के 2-3 months खत्म हो जाते हैं एंड मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस विच हैव ऑलरेडी स्टडी ट्वाइस, लाइक हाफ सिलेबस ट्वाइस हो जाता है, हाफ सिलेबस हाफ रह जाता है, तो उस टाइम मतलब जहाँ पे मैं ले रहा था कोचिंग, उन्होंने शुरू कर दिए थे फुल मॉक टेस्ट, इवन दो एक सिलेबस यू नो अभी भी पेंडिंग था उसका रिवीजन। उससे क्या होता है कि आपको जितना सिलेबस आपने कर लिया है उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ में, राइट? Got it. तो मीन्स इवन दो इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग फुल, इट डजंट मैटर एट दैट पॉइंट, बट मैंने तो फुल मॉक टेस्ट देना उस टाइम शुरू किया था, एंड टुवर्ड्स द एंड पहला रिवीजन खत्म हुआ पूरा का पूरा, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट दे वर ऑल्सो ऑन गोइंग। और ऐसा नहीं था कि हर दिन ही दे रहे हो, हफ्ते लाइक फोर्टनाइटली वंस, 15 days में एक टेस्ट हो गया, वो भी बहुत ही यू नो इट वॉज वेरी चिल, दस नो लाइक स्ट्रेस का कोई वो नहीं था उस टाइम, नो बट एवरीबडी बस हाँ चलो दे दो यार, ऐसा चल रहा था फ्रेंड्स के साथ भी। सो दैट वाज नॉट वेरी बिग ऑफ ए इशू, बट हाँ फर्स्ट रिवीजन जब कंप्लीट हुआ उसके बाद पीपल स्टार्टेड गेटिंग सीरियस कि हाँ आप एक रिवीजन अब 2 बार पढ़ लिया है पूरा सिलेबस, तो नाउ फुल सिलेबस पे इफ यू हैव टू फोकस। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता रहा, फर्स्ट इट वाज 1 in 15 days, फिर 1 in 7 days हुआ, एट टुवर्ड्स द एंड दैट वाज 1 in 1 day and sometimes 2 in 1 day. That was not intellectually challenging for you? No, because बाकी सब चीज़ों से फ्री हो गए थे ना, तो एक मॉर्निंग में 9 to 12 दे दिया, एक नाइट में 6 to 9 दे दिया, ऐसा कुछ कर लिया। बीच में यू नो अब 6 hour का ब्रेक भी मिल गया बीच में, उसके अंदर यू नीड टू चिल, यू नीड टू रिवाइज समथिंग इंपॉर्टेंट विच यू लॉस्ट इन द 9 to 12 एग्जाम, वो आप एक बार यू नो यू गो थ्रू इट। तो मीन्स उस टाइम मतलब गिविंग गैप बिटवीन 2 एग्जाम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप एक एग्जाम दे के दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते। वी आर नॉट गिविंग जेईई एडवांस एग्जाम, जी हमें 2 घंटे की ही बीच में ब्रेक मिलती है एग्जाम के, सो दैट थिंग गेट्स ईजी फॉर अस। तो यस मीन्स अगर आप यू नो यू थिंक दैट यस यू आर इन द मूड टू गिव अ टेस्ट, व्हाई नॉट गिव 2 in a day. Now to touch an emotional question of all the students who are watching this interview right now, like majorly अगर बच्चे YouTube पे आते हैं, it is to search for motivation and strategies. So let us take an example that you started giving mock test and now you are not getting good marks. कभी ऐसा हुआ कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और इन केस कभी भी हुआ, how did you combat that? आई फील लाइक इस चीज़ में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अप्स एंड डाउन सिर्फ आपके साथ नहीं होते, सबके साथ होते हैं, राइट? तो कभी किसी का अप हो गया उस टाइम आपका डाउन हो गया, कभी आपका अप हो गया उसका डाउन हो गया। सो आई थिंक हैविंग अ गुड सपोर्ट सिस्टम इन दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्रेंड्स बनाओ, डोंट थिंक दैट यू आर ऑन दिस जर्नी अलोन, एंड अकेले से कुछ नहीं होता। आई थिंक आई हैव लर्नड मोर फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन द पास्ट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन देन आई डिड फ्रॉम माई टीचर्स। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज अब तो एनीवेज फॉर यू गाइज कोविड इज़ ओवर, राइट? सो यू गाइज डोंट हैव दिस एक्सक्यूज ऑल्सो दैट हम घर पे हैं, हम अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसे लें? यू कैन गो टू ऑफलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स बनाओ, एंड अगर अभी तक नहीं बनाए तो यू नो यू स्टार्ट ट्राइंग, बिकॉज दे आर द वंस हु विल गेट यू आउट ऑफ दिस यू नो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ नॉट स्कोरिंग, बिकॉज उनके साथ भी सेम होता होगा, वो भी सम टाइम लूज करते होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर यू हेल्प देम इन दोज टाइम्स एंड देन दे विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू व्हेन यू आर फीलिंग लो. I would like to tell everyone that we also have Arpit's mother with us, and she is super proud of what her son has achieved. So would you like to highlight the role your parents have played during this journey? Okay, so I was preparing for NTSC in grade 10th, right? तो उस NTSC के 1 week before my dad expired. So that was emotionally, it took an emotional toll on me, and
बाद में वो भी क्लियर नहीं हुआ था एग्ज़ाम, बट दैट डिडंट मैटर फॉर मी एट द टाइम. So after that my mother has only been there with me along with my grandparents. तो उस टाइम 10th में it was very tough, but then we all accepted the reality that yes, so this has happened and we need to move on with our lives. We can't stop our lives, right? Because मेरे को उनका भी देखना है, मेरी यंग सिस्टर है, सबका देखना है, ग्रैंड पेरेंट्स. तो उस सब का सोच के थोड़ा सा आई थिंक इनेट वो मोटिवेशन भी आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10th, that I have to do something for myself and my family. And उस टाइम my mother and my grandparents, मेरी सिस्टर तो छोटी थी, so they were very supportive along with my teachers because I was associated with my institute since grade 9th, right? So teachers के साथ एक अच्छा सा bonding बन गया था उस टाइम. तो they were there for me at the time and they didn't care what had happened. Anytime I was feeling low, I used to call them. So yeah, I feel like I was able to achieve this because of that support system also. So I think that apart from the teaching staff, non-academic staff also plays a very important role. Your friends, the other people who work there, who you have a strong bond with, the mentors, the mental health specialists also. Because all these people had played a very big role in my preparation, and agar wo na hote, so I don't think I would have been able to achieve this. You realizing this responsibility, Arpit, is a greater feat than you securing Air 7, and I'm really proud of you for doing that. So now let us go to the exam phase. For example, abhi ek mahine mein exam hai ya fir ek hafte mein exam hai. How was it for you before the exam? Were there many thoughts running around कि क्या होगा, because अब तो इतना ज़्यादा exam pass आ गया? Actually उस time last 1 month 2 months में stress levels they peak. मतलब उतना स्ट्रेस आपने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा जितना वो 1 month 2 month पहले आता है. Okay. So one very good step that I took at that time was talk to people about it. Not just my friends, not just family, but specialists who are experts in this. So I think that is very important. Anytime you feel like this preparation is taking a toll on your physical and mental health, you need to talk to someone. You need to take a break if you want, because this is not the end. I feel मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ NEET ही आपकी ज़िंदगी है. There's a lot you have to do later in life. तो सबको देख के and talking to people about this, because मेरे को उन्होंने कुछ tips दिए, meditation बताया, योगा बताया, and breathing techniques. All those things I think really helped me, and वो stress level really कम हो गया था उस time because of all these things which happened in the last few months, I think. So if you ever feel that yes, it's affecting you very badly, you just take a break. And if you can't take a break because आखिरी के 1-2 months you talk to someone, and I think they'll help you about it. But you need to blow off some steam. Yeah, that is important. For some people their friends are enough, for some people their parents are enough, and the people who they are around, they're enough. For some they might need extra help, so why not? There's no shame in it. Right. Everybody goes through it. Highlighted a very important issue. Very glad that you did it. Okay. So for example, tomorrow is your exam. Let us move into the past. So how did today look like if tomorrow was your exam? Okay. So basically एक चीज़ मैंने अपने आप को promise की थी that एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना. Oh. Because आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 1 day won't make a difference, right? And वो थोड़ा सा आपको means you get a little bit, you cool off basically. But I was not able to uphold that promise with myself, because रहता है in the back of the mind ये रह गया मॉर्फो के, एक बार और एग्जाम्पल्स पढ़ लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए वो पढ़ लो. तो हाँ मीन्स 2-2 मिनट किताब खोल के देखी थी. अच्छा. बट ऐसा नहीं था कि पूरा दिन पढ़ता रहा. इट वॉज वेरी चिल डे. लेट उठा एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक, सब कुछ चिल किया, मेडिटेट किया. इट वॉज ऑल फाइन. बट रात को मुझे नींद नहीं आई because tomorrow was exam, right? So I tried to sleep at 10, but मेरे को नींद नहीं आई. I think मेरे को कुछ 1 या 2 o'clock मुझे नींद आई. And then in the morning exam 2 to 5 होता है, right? 2 to 5:20. But my reporting time was 11 o'clock. I had to reach 3 hours before the actual exam started. तो उस time I think even though it was 2 o'clock, I think I woke up around 9 to 10 o'clock.
and like not 10, 9 o'clock मैं उठ गया था, and by 11 o'clock I reached the center. So that last day was like this. I tried not to study, but I studied. So we just had an insight of what Arpit's day looked like one day before the examination. Now let us go back to the day when you were sitting in the examination hall. The paper was in front of you, and these 3 to 4, not 3, but now 3 or 20 minutes are going to decide exactly how much you prepared for and worked hard for in the last 2 years. What was it like? So basically I had to report 3 hours early, right? तो 3 घंटे पहले रिपोर्ट करना है and then 3 घंटे एग्जाम लिखना. So for me the entire thing was for 6 hours 20 minutes rather than being just 3 hours 20 minutes. So one very good thing I did was the lack of sleep which I had the last day, I covered it up in those 3 hours before the exam that I had. I just laid on the table and I tried to sleep and meditate as much as I could. So I think that thing really helped me. And exam start होने से पहले I remember I used the washroom. So exam के बीच में मुझे कोई दिक्कत ना आए. And exam आया. And उस time for some reason I feel invigilators get very pokey because आप exam solve कर रहे हैं and वो हर 2-2 मिनट बाद आ जाते हैं. आप इस पे साइन करो, इस पे आपका thumb impression दो, इस पे दोबारा साइन करो. These things उस एग्ज़ाम में मेरे को बहुत इरिटेट किया. तो anyways वो सब कुछ हुआ. And पहले I was very like exam because that was the exam of my life. That is going to decide where I go further. So first I was very careful, and then I realized that bio usually क्या होता है, people what they do bio they complete early, right? Because even though you have to solve 90 questions वो 30-40 minutes में हो जाता है for most of the people. एंड वैसा ही चल रहा था मॉक टेस्ट्स में भी जो पीछे चल रहे थे मेरे. बट दिस टाइम बायो का पेपर आई थिंक वाज वन ऑफ द टफेस्ट एंड इट वाज इन एनसीईआरटी. सो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी लो हो गया कि हाँ है तो एनसीईआरटी के अंदर से ही, बट फिर भी क्यों नहीं आ रहा हमें, एंड वाई इज इट टेकिंग टू मच टाइम. तो आई रिमेंबर मेरा बायो टुक अ लिटिल मोर देन 1 hour एंड बाय दैट टाइम आई वॉज पेट्रिफाइड बिकॉज फिजिक्स द बिगेस्ट थिंग जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इज़ येट टू कम. और पता नहीं वो पेपर कैसा आएगा क्योंकि मैंने ग्लांस करके भी नहीं देखा था कि पेपर कैसा है. Oh, you did not even look at the physics section. मेरे शुरू से पहले ही क्वेश्चन देखने से ना दिमाग में पहली एंग्जाइटी बन जाती है that yes we have to suffer through that. So I think that you should leave. मैंने बस I left it for the last कि हम बाद में देखेंगे कैसा पेपर है, not to focus on that early. So bio का paper took so much time. After that chemistry, even though I feel like chemistry part was the toughest in my paper, I still did it the earliest for some reason. And I think that hastiness also played a role in me losing 10 marks. And then मतलब and ऐसा नहीं था कि मेरा उसमें पूरा पेपर हो गया था. Bio का even it took more than 1 hour. Still मेरे जो doubts थे, I still had to ponder upon them. And physics का पेपर इतना easy आया, like I was so relieved. I think that thing gave me the confidence that I needed, that yes, physics paper is very easy and jaldi ho gaya it. I think physics paper I did in 40-45 minutes. So I still had a huge chunk of, I think 1 hour left. तो उसके अंदर जो मेरे क्वेश्चंस रह गए थे वो देखे एंड एक बार रैपिड रिवीजन किया पेपर का एंड देन मैंने लास्ट में उमर भरना शुरू किया. फॉर मैनी पीपल दे डू साइमल्टेनियस बबलिंग, एक क्वेश्चन करके दूसरा बबल करते हैं. बट फॉर मी शुरू से ही मेरा प्रैक्टिस रहा है कि एंड में बबल करो एंड लाइक उसमें एरर मैंने अपने कम कर लिए थे शुरू से ही. सो आई थिंक दैट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. Okay, so these are some great answers of some great questions answered by Arpit, and I'm hoping that these answers will help all the students in modifying their preparation and taking insights from the strategies that Arpit used and score as well as he did. So Arpit, are you ready for a rapid fire round we have planned for you? Yes, I'm excited about that. Okay, so there are going to be 5 questions. I'll ask you the question and you instantly answer with the first thing that comes in your mind. What job would you be absolutely horrible at? Being planned, like planning something. Okay. I don't think I'm a good planner. You're not? And this is coming from AIR 7, everyone. So do not lose hope in yourselves. Okay. So when things break, do you prefer to fix them or replace them? Fix them. Okay. If you could know the absolute and total truth to one question, what question would you ask? Does God exist?
Stephen Hawking says yes, but okay. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? Leave my hometown forever. Because I think world is a big place, so I need to explore. What is your favorite superhero? Definitely Iron Man. Oh, I love you 3000. okay, that is great. Also, is there an app that you hate but use anyways? I hate LinkedIn, even though I'm not supposed to be at it. I still have it. So those were some amazing answers, Arpit. So for such amazing answers, we are going to gift you with this hamper, जो मुझे नहीं मिला है, but आपको मिल रहा है. So congratulations on this wonderful feat that you have achieved, and this is just the beginning. We look forward to more achievements, right? Okay, Arpit. If now you have to target topper to come in Chamomile Tea with toppers and then again give great insights, who would that be? Actually, 3 of my friends are dying for this. So I would like to tag Siddharth, who is All India 5, Okay. Jeevan and Mahit to come and share their stories on Chamomile Tea with toppers. So wrapping up this entire session, we are really hoping that the questions that I asked and the answers that Arpit gave has provided every student with a great insight to move forward with their preparation journey. Last message, Arpit, that you would like to give to the viewers. Just chill yaar. This is not the end. Matlab, okay, important hai, but then also this is not the end of your life, right? So never take too much stress about it and stay focused. I think that is the most important thing in your preparation. So all the best. Thank you so much, Arpit, for giving such insightful and deepful answers. I'm hoping that the viewers got the answers to a lot of questions, the directly asked as well as the indirectly asked. If you have any queries, you can let us know in the comment section. Thank you so much, everyone. Thank you for your time and thank you for watching Chamomile Tea with Toppers.